live. Ask them to open the videos. We're live now on YouTube. Yes. नमस्ते, आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में किडनी वॉरियर फाउंडेशन के साथ। मेरा नाम शालिनी सिंह है और मैं किडनी वॉरियर फाउंडेशन की एक मेंबर हूँ। आज मेरे साथ इस पैनल पर हम डिस्कस करने वाले हैं लिविंग वेल विद एनीमिया ऑफ सीकेडी। और हमारे साथ आज पैनल पर हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर संजय गुलाटी एवं डॉक्टर अमित गोविल। मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डॉक्टर संजय गुलाटी से, जो कि डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं फोर्टिस वसंत कुंज में। He was also previously working as a professor in nephrology at Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, and has also worked as an associate professor in pediatric nephrology at McMaster University, Hamilton, Canada. He has special expertise in managing kidney transplants and children with renal diseases and has experience at leading hospitals in the UK, Australia, and Canada. He is a reviewer for several prestigious journals like Pediatric American Journal of Kidney Disease, Pediatric Nephrology, and Indian Pediatrics, and has other editorial responsibilities as well. He has also written several articles in newspapers and magazines to create public awareness about kidney related issues. We also have Dr. Amit Govil. Dr. Amit Govil is an accomplished educator and is currently leads a training program in nephrology and transplantation. He completed his nephrology fellowship at the University of Cincinnati. He is trained in transplantation at Oregon Health and Science University. He has served in leadership positions at various regional and national organizations and also leads several kidney transplantation clinical trials. Dr. Govil has been recognized by the American Society of Nephrology, the American Society of Transplantation, and the National Kidney Foundation. He has received multiple awards nationally and internationally. Welcome, doctors. We are glad to have you aboard. Thank you. Thank you. Thank you. I would now request Dr. Gulati to begin with his presentation, or if Dr. Amit wants to take over. I think it's Dr. Amit first because he talks about anemia in general, Yes. and I talk about kidney diseases and therapies. So over to you, Amit. Okay. Thank you. Thank you, Sanjeev. And welcome, everyone. I guess you can see the screen there. So again, good morning on World Kidney Day. So it's my honor and my privilege to be a part of this presentation here. And kidney disease is very near and dear to my heart. Not just because I'm a kidney doctor, but I somehow feel that the kidney disease is a silent killer. And most of us just don't know enough about it, or maybe not enough attention that we give to the disease and what it brings to us. So it's very important to understand what it can do. And one of the big things that it can do is anemia. And again, most of these things we can check only if we seek attention. So some of these things can only be found out if we pay attention as patients and as individuals to look for it. So I'll just give you a basic overview of anemia. Again, understanding that some of these may be medical terminologies, but just bear with me and just feel free to ask me any questions as we wrap up the presentation out there. So what is anemia? Again, anemia is when our blood cell counts go down. So there is a WHO criteria. WHO is a World Health Organization. Hemoglobin less than 13 grams per deciliter in men and hemoglobin less than 12 grams per deciliter in women. So that's just a universal or a WHO criteria. Again, each country, each
community may have a little bit different threshold in terms of what the regular hemoglobin levels that they see, but this is essentially what they go by. So what do our blood cells do? These blood cells carry oxygen to different organs of the body, and these blood cells which carry the oxygen, these are called the red blood cells or RBCs. And when there is a decrease in the number of these red blood cells, then there is less oxygen, and this is pretty much classically called as anemia. And as you can imagine, if there is less oxygen, we start feeling fatigued, and that's just one of the symptoms that we are talking about. So as the diagram shows, the normal level of blood cells, and then if the blood cells go down, then we call it anemia. So what are the common causes of anemia? One is, just think of it like if we have a finite amount of blood in our system, the way that blood level will go down is either if we lose the blood, so which means if we bleed from somewhere, whether it could be, say, a fracture or a trauma of my hand, and I start bleeding from there, and I bleed a lot, so that's acute hemorrhage. The second is gastrointestinal bleed, so someone has some ulcer in the stomach or intestine and it bleeds. It could either bleed like a blood, or it may just one drop at a time that we may not even notice, and that's more common that we see, especially with a lot of gastrointestinal problems that we may not see, maybe just presenting with a little bit of a darker color stools. So that's just one category of that the blood is being lost more, so more than what our body can make. So then the anemia starts coming in. Then the other is that the blood is there, but there is something which is destroying those blood cells. So now something is targeting against those blood cells. So either it could be what we call autoimmune hemolytic reaction. Again, what that means is that our own body is targeting towards its own cells. So essentially, think of it like I'm just trying to scratch myself and hurting myself in that process. So the body is trying to just kill those red cells, not realizing that those cells are so important for its own self. And then there are medications, drugs, which can cause the blood cells to hemolyze or to break down. So that's sort of, we have another category, which is destruction of blood cells. Then the third category is that we are not producing enough of those blood cells, which means that the blood cells are produced in the bone marrow. The bone marrow is suppressed or is not working to its capacity, or there may not be enough raw material, which results in decreased supply. So think of it like if you're in the kitchen and you're trying to make some potato curry and there is not enough potatoes in there. So you just don't have, even if you want to make more, you just cannot make more because there is not enough to make those blood cells. And then there are hormones, which we'll talk about in a minute, which essentially let us do it. So the hormone is probably like a gas lighter, which will let you light up the gas to make that curry. So the erythropoietin may be decreased. So even if we have everything else, we have the raw material, we have everything, we have the desire to make that food, we just cannot make it because we just don't have enough hormone in our body to make that blood cell. And then we could have cancer and other things which could sort of just make it very difficult for us to make these blood cells and cause anemia. So when we look at the common symptoms, again, one has to realize that a lot of these things you notice once you are severely anemic. So many of these things, when in mild anemia, we may not even notice, but yes, on the left side, if you have normal blood cells, that's how the skin may look. And we start looking paler, which is a very common symptom that we talk about when we look at an individual and we say, hey, you look very pale. Obviously, at that time, we are worried that, so we all know that because that's part of a normal discussion whenever we see a friend, a family, and we always make a comment that you are looking weak. So we all know that diagnosis already many a times that, hey, we are talking about anemia as a diagnosis in someone who has pale skin compared to how they were. And then other things could be fatigue, weakness,
we talked about the pale or yellowish skin, and then you could have irregular heartbeat because the heart is trying extra, it's working extra to pump extra blood because there is not enough oxygen for it. So it's just working more to provide more oxygen, and it can sometimes skip a beat here and there and become a little irregular. We get short of breath because, again, our body, every aspect of our body has to work harder to get the same amount of oxygen. Think of it like when we go up on the mountain, we get short of breath because there is not enough oxygen up there. So imagine that kind of situation. We are building itself in our own body without even going or climbing a mountain, that there is not enough oxygen in our blood. So we get short of breath, we get dizzy, lightheaded, and then obviously at some point of time, even the heart just feels squeezy, and we can have chest pain, and we get cold hands and feet because there is not enough circulation in our feet and hands, and can get headaches. So it's a constellation of things that we go through when we are anemic. And obviously, as I said, a lot of these things you would not see in mild or moderate anemia. Some of these things you may just see when you're severely anemic, which is not uncommon. We have seen a lot of people who could be walking with a hemoglobin of 3 or 4 and severely anemic, but they've just adapted to that lifestyle over a period of time. So going back to our definition, again, as we know, for every different age group, we have different expectation of what the hemoglobin should be. So if it's a younger kid, 6 months to 5 years, 11 of hemoglobin is a cutoff for the diagnosis. 5 to 11 years, 11.5 is a cutoff. 12 to 14 years, we are looking at a hemoglobin of 12. And if you have women more than 15 years, then 12. And with men over 15 years, the hemoglobin of 13. So that's the expected number below which you would call it anemia. So why do people with kidney disease or kidney failure get anemia? Again, as we discussed earlier about that hormone, so hormone is like a stimulant. It stimulates the bone marrow. So something like it goes to the bone and tells it to wake up and make the blood cells. So it's just like it's like a constant reminder to the bone cells or the bone marrow to make the red blood cells. So this is a very important hormone, which surprisingly is produced by the kidney. So many years back, when people did not realize what the kidney was or how important the kidney is, people did not even know that this hormone could be coming up here. And that's one of those things that 100 years back, people didn't even realize that what was the difference between sweating and making urine. They all thought that what we produce urine is very similar to how we sweat. So a lot of those things have become a lot more clearer over the years. And one of the biggest changes in the field of kidney disease has been that we realized that the kidney is the one which makes that hormone called erythropoietin, or we call it EPO. So EPO pretty much tells your body to make red blood cells. And as you can imagine, when you have kidney disease or kidney failure, the kidney is not able to make enough of that EPO. When it cannot make that enough of EPO, it just cannot tell that bone marrow to make that blood cells, and then the blood cell counts start to go down. So again, just a little complex diagram here, but the same process, that healthy kidney sends a hormone, which is the EPO, to the bone marrow to tell it how it works. The bone marrow produces the red blood cells. The red blood cells, they carry the oxygen. The oxygen then is carried all across the body, and we feel absolutely fine. But if the kidney function is reduced, then the EPO level goes down. The bone marrow doesn't produce as much blood. When we don't have enough blood cells, there is not enough oxygen to be carried around in the system. And then we all have all those complications that we just discussed a few minutes back. So these are the stages of kidney disease. Again, I'm not going to get into the details of how we define these stages, but essentially stage 1 is very minimal presence of kidney disease, or sort of a scratch on a kidney, if you may call it.
The stage 2 gets a little more. Stage 3 is when we really start getting worried that something is not good. And stage 4, stage 5 are just the stages of kidney disease, and stage 5 is part of when the kidney is almost failing, and we are talking about either starting them on dialysis or replacement therapy or a kidney transplant. So essentially, the stage 4 and stage 5 are sort of, I would say, terminal stages of kidney disease. Again, not in terms of the patient, but we're talking about how these stages progress over a period of time. So as you can see, as the stages go up, which means the kidney is not working enough, then we just don't have enough EPO being produced. And just a good way for many of us is to remember, and again, I'm based out of USA, so I use the word dollar, but even if we use Indian rupees, the way I explain to my patient is that if your kidney was worth 100 rupees when you were born or when you were young, and over the time as we age, with age and after age 60, the value of that kidney from 100 rupees will go down to 80, to 75, to 70, 65. Slowly it goes down. But when we talk about stage 4, stage 5, we are talking of the kidney valued being less than 30 rupees. So stage 5 is less than 15 rupees. So think of it that our kidney originally was 100 rupees worth, and now it's just down to 15% or less, or 15 rupees of worth of kidney left out of that 100 rupees that we had to begin with. So that sort of gives you an idea how these stages work in definition of kidney disease. So when we look at again the same data a little bit more, as the stages of CKD increase, majority of the patients in stage 5, which is what we just discussed, less than 15% of the kidney is working, then we are talking of these patients literally need some sort of replacement of EPO. And the best thing that has happened over the last few decades is now we have external EPO therapy which is available, and we'll talk about it in a minute, because before that, blood transfusion was a norm for all these patients. Now, there are multiple articles. Again, there is just so much literature now on anemia, kidney diseases, stages of kidney diseases, and a lot of it is intuitive because you can make out that anemia is associated with poor prognosis, even in stage 3 kidney disease, and definitely stage 4 and 5, it gets more. So if someone has anemia, then they sort of tend to go to stage 4 or stage 5 faster. So which means that anemia by itself accelerates the progression of kidney disease. And unfortunately, as we look, the mortality, which is the death rate, is higher in anemic patients. And these are the same group, kidney disease patients without anemia, with anemia. So anemia by itself puts people with kidney disease at higher risk for mortality, for hospitalization, heart disease, and progression of their kidney disease. So it's pretty much, we go down faster on that road when we are anemic. So talking about the outcome of anemia in patients, we have reduced oxygen delivery to tissue, we have progressive heart disease, kidney damage, and decrease in blood cell counts, and hemoglobin is compensated by increased cardiac output, which leads to heart wall thickness. So the best way to think of it is, when people do workout, when they lift weights in gym, what happens? You start to build up muscles. So now building muscles outside is good, but when the same thing happens, imagine with the heart, which is made to work harder because it has to now pump more because there is not enough
RBCs in the blood. So it's more like a diluted, thin blood with less oxygen. So the heart has to work harder. Heart is a muscle. So when the muscle has to pump so many times, then it becomes thicker and thicker. Now, a thick heart muscle is not a good thing. So unlike our skeletal muscles, or our biceps and triceps and our calf muscles, where building up muscles is good, but building up heart muscle is not good. So what happens is that the heart just cannot work properly when there is severe anemia over a period of time, and we call it LVH, or left ventricular hypertrophy. And all in all, put together, it increases the chances of death in these patients. And definitely something that we don't talk about is quality of life that we all see around us. When people are anemic, they are more fatigued. They just don't feel like doing anything, decreased exercise capacity. And what happens is when they're just fatigued, they just don't understand things properly. They may not even laugh at jokes. They may not even enjoy watching the TV and understand a lot of basic simple things. They may find it difficult. So essentially, their quality of life also suffers with the anemia out here. Now, as we have talked about, and one thing I always say, that our body is an amazing piece of machinery. This is something that we cannot even imagine replicating, at least for now. We just do not even know how to replicate this perfect machinery that we have. So anytime this algorithm or this equilibrium is changed, it becomes very difficult for the organs to work together. So think of it, the way I explain sometimes is, think of it when you put your car key in the car ignition, one click and hundreds of car parts work together and the car starts and start moving. So imagine how much of coordination it takes. But even if one thing is not right, the car will not start. Or even if it starts and the wheel is not aligned well, or the differential is having some problem, something or the other, it just won't flow. You won't be able to travel for too long of a distance. So same thing we have realized over the time is that cardiorenal anemia, these are all syndromes, and they link the heart, the kidney, the blood cells, and all that. So they are sort of interfacing with each other and not helping each other, rather working against the health of each other. So it's just a complicating picture that comes up. So we have talked about this, and on the same format, again, tissue hypoxia, which means in decreased oxygen to the tissues and the cells, puts the heart at more risk. The heart muscles hardens up, which is not good for us, and then the cardiovascular disease and the mortality. So the risk is much higher, almost 15 times more higher in patients who have kidney disease. And the worst part is that half of the deaths in patients with kidney disease are because of the heart disease. And so it's not like the heart has gotten into trouble on its own, but things related to the kidney disease has put that much stress on the heart for it to fail. So, but at the end of the day, we still know that it's just not good. Like the kidney disease does result in all these things. And that's why I call it a silent killer, because on the surface, we just don't realize that what caused the heart problem. So at the end of the day, people may believe that this was just heart disease, but no, this was a kidney disease which resulted in cardiovascular problems down the line. So when we look at this whole spectrum all over again, anemia of kidney disease, the EPO production is down, either or even if the EPO is there, the bone marrow may or may not respond to EPO as fast as it would. The iron demands go up. The absorption of the iron goes down. We may have blood loss, as you can imagine, when you go to any hospital or whenever we are sick. The only way we really know what's going on is that blood has to be drawn.
If you're on dialysis, the dialyzer can clot many a times. So a little bit of blood here, a little bit of blood there, it can sometimes add up. If we are healthy, our bone marrow can replace all that blood. As we know, people are asked to donate blood, and they build it up back again in a day or two. But when you have kidney disease, then it becomes more difficult. The cell life is low, the nutrition is low because we are not hungry, we are sick. And on top of it, if we have infection and all that, then it just there is inflammation. So think of it that there is sort of a subtle fire inside the body, which makes it very difficult for our body to continue to function. So iron is important, very important to take iron as prescribed. Again, chronic kidney disease patients are at greater risk of iron deficiency, as we discussed, that there could be frequent blood tests, hemodialysis, blood losses, and decreased ability to absorb that iron. And then in general, when we look across, there is definitely iron deficiency. So it's not just the EPO deficiency, but also iron deficiency in men and women in kidney disease patients. So coming back to the same anemia pathway, I think as you may have realized, and by now probably all of you probably now know, I think it's been repeated time and again, that the kidney disease results in decreased EPO. Decreased EPO means decreased stimulation of the bone marrow, which means decreased blood cell production, which means anemia, which means the heart has to work harder and harder. These muscles become they overgrow. They don't become stronger, but they just overgrow in size, and over the time results in heart failure. Same thing, I'm not going to repeat this, but it just shows that yes, there are different pathways of how the bone marrow could work. But again, anemia in kidney disease was one of the most difficult morbid complications before EPO came into play. It was almost a routine to get monthly blood transfusion. As you can imagine, when people are on dialysis, it was a routine prescription to just give them the blood. And as you know, with the blood came a lot of diseases, a lot of other problems that we know are transmissible issues, and getting blood is not easy in general outside anyhow. So it was very difficult. But once EPO was discovered, then it changed the way of how things have been, because not only does it make your anemia better, but all the problems related to anemia can get better, including the heart disease and all that. So the mortality also goes down when we treat the anemia. So as we are trying to summarize this, the causes of anemia, one is decreased production, either EPO is low or nutritional. Again, we cannot forget that there could be other vitamins that may be low, which help in production, inflammation, infection, cancer, blood loss. Again, we don't need to check the EPO levels because we just assume they are low, and many a times that level checking may not reflect accurate answer of what we are looking for. So the tests that we do multiple blood tests, including some vitamin levels and iron levels. And we want to also make sure that you're not losing blood in the stool. So the stool for occult blood, it just means blood that we cannot see with our eyes out there. So as we said, EPO is more likely the reason that the blood counts are low, but then it's not always a cause, and that's where your doctor will need to see and make sure. But there are other reasons where, as we had discussed earlier, there could be other reasons why the red blood cells may not be living that long, or it could be iron deficiency, or it could be the toxins of the kidney failure, which inhibit the bone marrow to make that blood, and there could be some inflammation or blood loss or nutritional deficiencies. So as we diagnose this, we pretty much look at the symptoms, the findings, the signs,
Then you start thinking of what are the other reasons of anemia. Then the tests are done, and they look at the common things first. And if we figure out that the common things point us to a certain diagnosis, then pretty much we reach the diagnosis, and then we may do a specific test to get that final diagnosis. But as we discussed, most of the time in anemia in kidney disease patient is because of EPO being low and iron also being on the low side. So those are simple tests that can be done, and they can also check the vitamin B12, folate, and all that. So put it all together. Your doctor may prescribe EPO and some iron and some multivitamin. But the more important thing is it's a very preventable and treatable cause of a disease process, I would say. So in this day and age, I don't think anemia should be the reason for anyone to get sick from. So pretty much these are some of those tests that we do, but we don't have to get into the details of this. And iron management is key to successful anemia treatment. And we check some iron markers out there. Again, these are some things that we don't have to get into great details of, but more common things are just iron deficiency and low EPO level. Again, one of the things that come up is how often should I be checked for anemia? In general, you should be checked for anemia at least once a year. And if you have established kidney disease, then you'll be going to your kidney doctor, and they'll be checking based on the frequency of other things, your kidney disease and other markers, and depending on what your level is. So your doctor will recommend, but outside of that, at least once a year, it should be checked. So I'm going to stop here, and I'll let Dr. Gulati take over from here. And thank you for listening. Dr. Gulati, we cannot hear you. I think I'm muted. Yeah, you're audible now. Thank you. हाँ सो पहले तो मैं डॉक्टर अमित का धन्यवाद करूंगा कि एक बहुत अच्छी तरह उन्होंने आपको समझाया कि हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के क्या क्या कारण होते हैं। और एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक इंसान की, जो मैं जब लखनऊ में था संजय गांधी पीजीआई में, तो एक बार मेरे पास आया तो थोड़ी देर उससे बातचीत की। तो जी 24 साल का था लड़का, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। इसने अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी पूरी करी। साल में एक बार वैष्णो देवी की यात्रा करता था, जो आप सब कुछ लोगों को शायद पता हो कि 14 किलोमीटर का बड़ा डिफिकल्ट ट्रैक है। और अपनी लोकल मोहल्ले की क्रिकेट टीम में भी था, साइकिलिंग करता था। लेकिन आपको ये जान के काफी सरप्राइज होगा कि इसको स्टेज 4 किडनी डिजीज थी, यानी ईजीएफआर उसका केवल 18% था। तो जब मैंने देखा कि क्या सीक्रेट है, तो उसके हमने पिछले 6 साल, तो ये 10 साल की उम्र पे सीकेडी पकड़ा गया था और उसको
ही वॉज बट बहुत ही कंप्लायंट पेशेंट था। तो हीमोग्लोबिन उसका कभी 11 से कम था ही नहीं। उसने हमेशा रेगुलरली अपना एरिथ्रोपोइटिन लिया, और बिकॉज ऑफ दैट ही स्कूलिंग करी, इंजीनियरिंग करी, एंड एन एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो जो अनीमिया ट्रीटमेंट का गोल है, इट इज टू इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन लेवल टू अ रेंज दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, एंड मोर इम्पोर्टेंट ऑल्सो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ना पड़े। जो टारगेट्स हैं जनरली किडनी पेशेंट्स में 11 के ऊपर, बट ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट इट। अनीमिया का क्या ट्रीटमेंट है, और इसमें बहुत सारे चेंज आए हैं। जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया 30 साल पहले, तो हमारे पास आयरन होता था, मल्टीविटामिन होता था, और हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते थे। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत अच्छी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि इससे किडनी ट्रांसप्लांट में एंटीबॉडीज बनती हैं, सक्सेस रेट कम होता है। और फिर एक जैसे कि डॉक्टर अमित ने बताया, एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, और उसने तो अनीमिया की ट्रीटमेंट को एक टोटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स बहुत धीरे धीरे कमजोर हालत में होते थे, 6-7 का हीमोग्लोबिन था, तो जो कंप्लायंट पेशेंट्स रहे वो 11 पे पहुंचे, और ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी बढ़ गई। तो ये ऑलरेडी डॉक्टर अमित बता चुके हैं कि जब हम अनीमिक पेशेंट्स को देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो पहले हम आयरन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर आयरन थेरेपी नहीं होगी तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बेस जाएगा। तो आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि क्या मुझे कोई आयरन की कमी तो नहीं है बेटा, और ये सब चीजें अगर नहीं है तो हम एरिथ्रोपोइटिन का इस्तेमाल करते हैं। सो आयरन में भी तरह तरह के आयरन आए, और पहले जो इंजेक्टेबल आयरन होते थे उनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे। बड़ी सीवियर रिएक्शंस हो जाती थी। और अब एडवांस्ड आयरन प्रिपरेशंस आ गई हैं, और वो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते थे, हॉस्पिटलाइज करके देते थे। अब तो ऐसे आए हैं जो हम ओपीडी बेसिस पे, वी कैन जस्ट यू कम इन, यू गेट द शॉट एंड यू कैन गो बैक। तो ओरल आयरन डेफिनेटली अर्ली स्टेजेस ऑफ सीकेडी में देना चाहिए, लेकिन जब ओरल आयरन का एडवांटेज है, इट कैन बी गिवन एट होम, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, और कोई रिएक्शन नहीं रहता। बट जैसे जैसे किडनी की डिजीज बढ़ती है, ओरल आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, और फिर डेली आपको खाना है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, और कई लोगों में फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी नाम की चीज भी होती है, जिसमें एरिथ्रोपोइटिन देना पड़ता है। तो जो पेरेंटल आयरन थेरेपी है, इंजेक्टेबल, एडवांटेज ये है कि उससे अगर कई लोगों को एरिथ्रोपोइटिन की जरूरत नहीं पड़ती है, या अगर आपको एरिथ्रोपोइटिन दे रहे हैं तो उसकी डोज कम होती है, कॉस्ट डेफिनेटली कम होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की रिक्वायरमेंट ना के बराबर हो जाती है। और अनीमिया, जैसे कि डॉक्टर अमित ने भी बताया, और हार्ट डिजीज का बहुत सीधा कोरिलेशन है। हम अनीमिया को अंडर एस्टिमेट, अंडर ट्रीट करते हैं, बट इसका इफेक्ट साइलेंटली हार्ट पे आता है। तो अगर आपका अच्छा हीमोग्लोबिन रहेगा, हार्ट पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगी, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस विच आर अ मेजर किलर इन किडनी पेशेंट्स, वो ड्रामेटिकली कम हो जाती हैं। और फिजिकल कैपेसिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, वो इट चेंजेस ड्रामेटिकली। डिसएडवांटेजेस आयरन इंजेक्शन के हैं, रिएक्शन हो सकता है, बट आज की डेट में बहुत सेफर आयरन प्रिपरेशंस आ गई हैं। और इन्फेक्शन के दौरान हम लोग कभी इंजेक्टेबल आयरन नहीं देते, क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, कभी कभी फास्फोरस लेवल लो हो सकता है। तो ये एरिथ्रोपोइटिन, जैसे कि ब्रीफली डॉक्टर अमित ने डिस्कस किया, ये एक हार्मोन है जो किडनी में प्रोड्यूस होता है। इसीलिए किडनी डिजीज में एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी होती है और अनीमिया होता है। और इसका जो पहली बार यूज हुआ 1984 में, एमजेन नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी, और उसने इसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया। और अब फिर लॉन्ग एक्टिंग एरिथ्रोपोइटिन भी आ गए हैं, जो आपको ये एरिथ्रोपोइटिन जो है हफ्ते में 3 बार देने पड़ते हैं, और हफ्ते में एक बार, 15 से 30 दिन में एक बार वाले भी एडवांस एरिथ्रोपोइटिन्स आ गए हैं। तो ये है एरिथ्रोपोइटिन, जो मैं आपके बारे में जिसके बारे में बता रहा था, 1986 में प्रोड्यूस किया। और
इट इज एडवांटेजेस हैं कि आयरन ओवरलोड से बचते हैं, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन से बचते हैं, ट्रांसफ्यूजन इन रिएक्शन से आप बच जाते हैं। तो ये जो हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं ये बोन मैरो पे काम करता है और वहां से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं कि किडनी का ब्लड फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल होता है। तो एडवांटेजेस हिपोथेरेपी एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी की एनीमिया को करेक्ट करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड खत्म हो जाती है, एज आई सेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सरसाइज टॉलरेंस, भूख अच्छी हो जाती है, आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी, बहुत में काफी इंप्रूवमेंट आता है, कार्डियक फंक्शन इंप्रूवमेंट हो जाती है। एंड ये आप घर पे ही दे सकते हैं, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली लगाते हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंट, आपको हॉस्पिटल भी आने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज, हाँ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि एक तो ये इंजेक्शन है, थोड़ा पेन होगा। ये भी देखा गया है कि थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और अगर आप बहुत ज्यादा ही शुरू में लोगों ने जब ट्रीटमेंट शुरू की तो 13 हीमोग्लोबिन तक पहुंचे, और उसमें तो देखा कि कुछ स्ट्रोक भी हो गया था। कुछ स्वेलिंग आती है, फीवर आ सकता है, डिजीनेस आ सकती है, नोजिया आ सकता है। सो और एक इंजेक्शन हर बार लेना, इट इज नॉट अ वेरी पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट। सो लिमिटेशंस हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इंडिया जैसी कंट्री में, कि आपको एक टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन करना है, क्योंकि जहां से जरा भी टेम्परेचर आपका, इट हैज टू बी स्टोर्ड एट 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टिल द टाइम अब आप यूज करें। और ये आपकी स्टोरेज होनी है राइट फ्रॉम द फैक्ट्री till you insert it in your arm. तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे 40-45 डिग्री टेम्परेचर चलता है, तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये किसी भी, इसे कोल्ड चेन बोला जाता है, यू हैव टू इंश्योर कि ये जब तक आपके पास पहुंचा तो वो प्रॉपर टेम्परेचर उसमें मेंटेन हो रहा है। इट्स नॉट इजी, कहीं भी ब्रेक हुआ तो वो पानी बराबर हो जाता है, इट्स अ वेस्ट, तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। और एक अगर डायलिसिस में है तो नर्स को देना पड़ता है, और अगर बहुत ज़्यादा दे तो जैसे मैंने बताया कि आपको स्ट्रोक और का हार्ट डिजीज का भी रिस्क रहता है। और कई बार ये काम ही नहीं करता है, इसे बोलते हैं हीपो रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस तब बोलते हैं जो टेक्निकली 450 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी विद इन 4 to 6 वीक्स हो जाता है। और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं आपकी बॉडी में? इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ब्लड लॉस हो रहा है। पहले हम एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी देखते थे, आजकल ना के बराबर हो गई है। हो सकता है आपको थैलेसीमिया जैसी हीमोग्लोबिनोपैथी हो, विटामिन D12 फोलेट डेफिशिएंसी हो, मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी, हिमोलिसिस जैसे डॉक्टर अमित ने बताया, न्यूट्रिशन आपकी अच्छी नहीं है, रेयरली एक प्योर रेड सेल डिप्लेजिया कर देता है, ये बोन मैरो पे एक तरह का रिएक्शन होता है। और अगर आपका डायलिसिस डोज प्रॉपर नहीं है, कुछ ड्रग्स इंटरफेयर करती हैं, तो इससे ऐसे केसेस में एरिथ्रोपोइटिन काम नहीं करेगा। सो एरिथ्रोपोइटिन रिस्पॉन्स नहीं आने के कई कारण हैं, इंक्रीज विस्कोसिटी, प्लेटलेट फंक्शन, हीमो कंसंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ आयरन की वजह से भी इससे रिस्पॉन्सिवनेस नहीं हो सकती है। तो अगर एरिथ्रोपोइटिन के अलावा भी कोई ऑप्शन है, और ये एक बहुत बड़ा एडवांस और आया है, इसे हम एक क्लास ऑफ ड्रग्स बोलते हैं, जिसे कहते हैं HIF-PHI इनिबिटर्स। और इन वेरियस स्टडीज दे हैव कम आउट टू बी ऑन पार, बिल्कुल इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन के बराबर इनका इफेक्ट रहा है। और इन कंट्रास्ट टू इंजेक्शन, दिस आर टैबलेट्स विच कैन बी टेकन ओरली। और एक ये बहुत ही गर्व की बात है कि इंडिया में एक इंडियन कंपनी जाइडस ने इसको मैन्युफैक्चर कर लिया है, जिसकी वजह से ये दवाई बहुत जल्दी इंडिया में उपलब्ध हुई, एंड लिटरली एट 100 द कॉस्ट विच इज देयर इन यूएसए। यूएसए में तो ज्यादातर दवाइयाँ डॉक्टर अमित शेयर करेंगे, शायद गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, इंडिया में जबकि आपको मेजोरिटी ऑफ अस हैव टू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है ये। सो एडवांटेजेस क्या है इस दवाई के? HIF-PHI इनिबिटर्स या डेसिडुस्टैट या ऑक्सीमिया जिसे बोला जाता है, इट इंक्रीजेस एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन इन द बॉडी। तो एक्ट तो वही करती है, एरिथ्रोपोइटिन को ही बढ़ाती है, जो बोन मैरो पे असर करेगा। और स्टडीज ने बताया है कि एरिथ्रोपोइटिन के बराबर काम करती है। और खासकर जो पेशेंट्स में एरिथ्रोपोइटिन हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, रेजिस्टेंस होती है, उसमें भी काम करती है। इम्प्रूव्स आयरन मेटाबॉलिज्म। सो फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी नाम की एक चीज होती है,
उसको ये ऐसे केसेस में भी ये इफेक्टिव है। और इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, हेप्साइडिन नाम के एक मॉलिक्यूल को टारगेट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांस था। जब जाइडस ने इसको पहली बार इंडिया में प्रोड्यूस किया, मार्केट किया आफ्टर प्रॉपर ट्रायल्स। डोज जनरली हम यूज करते हैं 100 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ वीक। ये ख्याल रखना है कि नो फूड कंजम्पशन 1 आवर बिफोर एंड 2 आवर्स आफ्टर ऑक्सीमिया। और इफ डायलिसिस पेशेंट है तो डायलिसिस के बाद ऑक्सीमिया को लीजिए। अगर आपकी डोज मिक्स हो गई है तो एक्स्ट्रा डोज लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक द नेक्स्ट डोज। तो बेनिफिट्स डेसिडुओस्टैट या ऑक्सीमिया के हैं। ओरल रूट है, इंक्रीजेस और मेंटेन्स हीमोग्लोबिन लेवल्स इफेक्टिवली, इंक्रीजेस एंडोजेनस एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन इन द फिजियोलॉजिकल रेंज, एरिथ्रोपोइटिन बढ़ा देगा। हेप्साइडिन को रेगुलेट करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है, और इन्फ्लेमेशन में भी ये काम करता है। और हाइपरटेंशन इसके साथ नहीं देखी गई है जो हम एरिथ्रोपोइटिन के साथ देखते हैं। So thank you for this opportunity, World Kidney Warriors Foundation, and I'll hand over the podium back now so that हम कुछ सवाल जवाब पे कर सके। Just a moment. Thanks, Dr. Amit and Dr. Sandeep Gulati. It was a very knowledgeable session. We really had a good insight on anemia. कुछ questions आ रहे हैं डॉक्टर. I would like to ask you that since there are so many new therapies in anemia treatment, what do you think would be the best among these? So देखिए, जब सबसे पहले अगर एनीमिया है तो आयरन तो देखना ही है, आयरन देखना है, मल्टीविटामिन देखना है। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। कई बार हम लोग ब्लाइंडली आयरन थेरेपी देते हैं, और ऐसे हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं। दिस इज मोर फॉर जिन लोग आउट इन द कम्युनिटी, कि जैसे कहते हैं रेजिस्टेंट एनीमिया, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया। तो ऐसे में किडनी की जांच जरूर कराएं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, किडनी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आयरन therapy, iron metabolism and hemoglobin formation. So unexplained anemia is a sign of kidney disease। और थेरेपीज में हमने अभी डिस्कस किया, आयरन मल्टीविटामिन, आयरन ओरल दे सकते हैं, इंजेक्टेबल दे सकते हैं, एरिथ्रोपोइटिन दे सकते हैं, और ये HIF PHI इनहिबिटर्स नाम की एक नई क्लास ऑफ ड्रग्स है जो आप बहुत आसानी से कन्वीनियंटली ओरल टैबलेट्स ले सकते हैं। तो डॉक्टर, इन ओरल टैबलेट्स का क्या कोई साइड इफेक्ट है? इज इट वेरी सेफ टू यूज फॉर people like By us? and large, so we have now, I'll hand, after this, I'll hand over this to Dr. Amit to share his experience, क्योंकि इंडिया में अब 2 साल हो गए हमें इस्तेमाल करते हुए। तो बाय एंड लार्ज दे आर वेरी वेल टॉलरेटेड। हाँ, कुछ पेशेंट्स में, जैसे जिनको रेटिनोपैथी है, डायबिटिक पेशेंट्स में रिसेंट कार्डिक प्रॉब्लम हुई है, और कैंसर्स में थोड़ा कंसर्न है, बट बाय एंड लार्ज रीजनेबली वेल टॉलरेटेड। ओवर टू अमित, आपका तो हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बिकॉज दे केम आउट मच अर्लियर इन US विद दिस। बट नहीं, जस्ट नहीं, यू राइट, लाइक एज यू सेड कि इनके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, एंड मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिवर एंजाइम्स भी चेक करते रहते हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक एज सच तो ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज से कि एकदम बिना साइड इफेक्ट की तो कोई दवा नहीं होती है। तो बट ये है कि एनी मेडिसिन यूज्ड in the right condition, in right state, and with a good follow up, so it's fine. So one thing I would always say कि even वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे तो ये होता है कि medicines अपने आप से कोई नहीं ले सकता है, बट ये है कि इंडिया में कई बार होता है कि एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिखा के फिर ये हुआ कि अच्छा मैं अपने आप से भरवा लेता हूँ फार्मेसी से। तो वो नहीं करना चाहिए। यू शुड कंटिन्यू टू फॉलो विद योर डॉक्टर, so that way they can monitor the use of these medications. So very important, but uske alawa they are very safe. Right. And doctor, is it as effective as the current therapy that we are taking in India, like the injections that we are taking? हाँ, they are, but ये है कि अभी the cost, जैसे डॉक्टर गुलाटी बता रहे थे कि यहाँ भी it's a very little complex in how the costs are calculated
आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट उतनी नहीं होगी, बट ये है कि इंश्योरेंसेस विल बी पेइंग वेरी डिफरेंटली। तो अभी इट्स नॉट अ मेन स्ट्रीम, सो स्टिल डायलिसिस और उस जगहों पे मोस्टली अभी भी ईपो यूज होता है। All right. And the next question that we have is, if the hemoglobin is maintained with normal EPO plus iron, should they switch to oxemia? I think this is a decision to be taken jointly by the doctor and the patient. Normally एक golden rule हम कहते हैं कि never change a winning horse. मतलब अगर कोई चीज काम कर रही है और आप उससे परेशान नहीं हो रहे तो भाई चेंज इट। हाँ, अगर आपका हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं हो रहा है या आपको ठीक है इंजेक्शन से परेशानी हो रही है, इफ यू आर हैप्पी विद इट कंटिन्यू इट, बट इफ अगर कोई परेशानी हो रही है गेट बैक टू योर डॉक्टर एंड इट विल बी ऑलवेज बी अ जॉइंट डिसीजन। So is there any restriction in terms of what kind of people should use and should not use oxemia? Like, is it like, like if there are certain drugs, like they are restricted to pregnant ladies or something like that? Is it something for oxemia as well? Amit, you want to take this first? In what kind of patients you are not using these HIF PHI inhibitors? I think like definitely जैसे what you had said कि if they have any kind of a proliferative disease, diabetic retinopathy आँख में, definitely anyone with any kind of cancer और liver dysfunction, liver disease हो तो उसमें यूज़ नहीं करते हैं। बट वही है कि यहाँ पे lot of it depends on what the insurance prefers to use, and insurance prefers to use EPO because they have their own setup। तो जैसे डॉक्टर गुलाटी ने बोला कि अगर कोई चीज़ खराब नहीं है तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो many a times we don't change anything। तो Right. it's an upcoming class. People are getting more used to the medication, but it's something that over the time as we all say, कि every medicine has to stand the test of time, and I think it will stand the test of time. But अभी time धीरे धीरे जैसे आगे जाएगा and more and more people use it, then we'll have better idea. So India में जो cost है, I'll take up the cost because it's unique to every country. It actually they have marketed at a very affordable cost, which is works out to be slightly cheaper than the erythropoietin। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो रिमोट एरिया में पेशेंट आ रहे हैं, जब हमारे पास बहुत डिस्टेंसेस से आते हैं और जब वो एरिथ्रोपोइटिन लेके जाना होता था तो उनको बहुत एक मुश्किल। बहुत बड़ा चैलेंज होता था। उनको हम पहले आइस बॉक्स से बर्डन करते थे, फिर उसमें आइस डलती थी और पता नहीं जब वो चल जाते थे विलेजेस में, सम ऑफ दीज प्लेसेस डू नॉट हैव रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, शट डाउन होता है। सो आई थिंक not requiring cold chain is a big plus point of this oral molecule in the Indian setup। तो आप तो अपने जैसे बाकी मेडिसिन रखी हैं उसको रखें, स्पेशल कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो मेनी टाइम्स में पता नहीं होता कि जो केमिस्ट जिससे आप खरीद रहे हैं उसने कितना इफेक्टिवली इसको कोल्ड स्टोरेज किया। सो दैट नॉट रिक्वायरिंग कोल्ड चेन इज एंड इट एज आई सेड द कॉस्ट इज shade lower if it is compared। It's definitely not more expensive। महंगा तो बिल्कुल नहीं है। Oh, that's great. No, I agree because I think the most important factor जो है जो यहाँ पे अभी it's also important but not as important is the cold storage facilities। कि यहाँ पे generally लाइट नहीं जाती है। Most of the pharmacies are very like they're able to carry those things and they're very much closer to wherever patient is। अगर remote रूरल एरिया में भी है तो वहाँ भी फार्मेसी होगी जो वो कैरी करती होगी। तो ऐसा नहीं है कि उनको दूर से कहीं लेके आना पड़ता है। बट ये है कि बट यहाँ पे कॉस्ट एंड मार्केटिंग इज़ वेरी डिफरेंट देन other countries, and it's not just based on one single factor। So I think I don't know exactly, but the retail cost I think of both of them are very similar, unlike in India where I'm amazed and pleased that they were able to bring it down to a level where it is affordable।
and yeah. So doctor, another question that we have is there a maximum dosage that should be kept in mind for EPO and iron injections? श्योरली आई मीन हर एक दवाई की एक डोज होती है, और ईपीओ के बारे में हम लोगों ने, मैंने अभी थोड़ा सा बताया था, ईपीओ रेजिस्टेंस की 450 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लेनी है। और इसका भी जो डेसिडुओस्टैट है 150 मिलीग्राम 3 टाइम्स वीक से ज़्यादा हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। अगेन, एज डॉक्टर अमित सेड, डोंट जस्ट पिक इट अप। कई बार आपका फार्मेसी काफ़ी दोस्त होता है तो वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना सुपरविजन के मेडिसिन दे देगा। दीज आर न्यूअर मेडिकेशंस रिक्वायर फार्माको विजिलेंस, जिसे कहते हैं कि अभी हम भी सीख रहे हैं इस दवा को इस्तेमाल करते, नए नए साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। सो प्लीज टेक इट अंडर सुपरविजन। So, Yeah, one thing to remember is कि anemia तो खराब है ही, बट उसको आर्टिफिशियली ओवर करेक्ट करना भी ठीक नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स दैट केम आउट आफ्टर द ईपो यूज वाज, क्योंकि शुरू में होता था कि हीमोग्लोबिन जितना बढ़ा लो अच्छी ही बात है। तो अगर 10 है तो 10 का 12 कर लेते हैं, अच्छा 12 का 14 भी कर देते हैं और देके। बट धीरे धीरे जो स्टडीज आई, देन पीपल रियलाइज कि जब जैसे होता है कि एनीमिया मीन्स डाइल्यूटेड ब्लड, और एरिथ्रोसाइटोसिस जो ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। तो थिक गाढ़ा ब्लड जो होता है उससे स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट्स बनने के चांस। तो क्योंकि ब्लड सेल्स इतने सारे ज़्यादा बन गए कि वो उन ट्रैफिक जैम लग गया। आप ही लगाओ कि पहले एकदम सड़क खाली पड़ी थी तो वो भी प्रॉब्लम थी, मगर एक साथ अगर इतनी सारी गाड़ियां आ गई तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एकदम ट्रैफिक जैम हो जाता है और फिर वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दीज ड्रग्स आर सेफ। बट एक चीज जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर कोई चीज अगर एक्सेस से ज्यादा करो तो इट बिकम्स अनसेफ। तो दीज आर ड्रग सेफ्स ओनली इन द राइट circumstances. right. So that was all the questions that we had. Thank you so much for your time. It was such an insightful session. We really had a lot to learn. And thank you, Dr. Gulati. Thank you, Dr. Amit. Thank you, Shalini, and thank you, You. Vasundhara from the Kidney Warrior Foundation. Thanks, Zydus, and thanks a ton, Amit. Thank आपने you. अपना कीमती समय निकाला। नहीं, नहीं. It's my pleasure, and I'm happy I was able to be a part of this. My honor and my privilege. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Okay.